Yes, good afternoon, students. So, let us start. And I told you that today I will show you how the electric bell works. And electric bell also works on the same principle, that is the magnetic effect of electric current. So, this magnetic effect, how it is produced and how the electric bell works on this principle, so that we are going to see. Okay, so just everyone, you can just see, you have the textbooks also with you, the same diagram, just I am going to repeat it now. And first of all, now one by one, because the diagram is here, and we will just go on with the same diagram. Okay, so all of you know that this is coiled diagram, this one U shape is an electromagnet. This is an okay. So everyone, please listen carefully, and it is very important. Be attentive in the class. Everyone, each and everyone, how the working takes place. You have to write in the exam also all the structure of the electric bell as well as how is it work. Okay, so one by one, the same points I will repeat, and here I will explain with the help of the diagram. It is given here. So the first point now, just before that, so here electric bell is based on the magnetic effect of electric current. Then here it consists of the electromagnet which is wounded, or the coil is wrapped around this core, iron core, okay, and it behaves like a electromagnet. Understood? Now, one end of the coil is connected to one terminal of the battery. So you can just see one end, this end is connected to the one end of the battery, and the other end is to the steel rod that acts like a spring for the hammer touching the contact screw. So here it is attached here, and this is attached to the spring. ये contact screw है, this is the contact screw. ओके, जो कॉन्टैक्ट यहाँ पर बन रहा है. So here one end is attached to the battery, the other end is attached to the string that is called as the spring for the hammer touching the contact screw. So ये spring, यहाँ ये जो spring है, ये spring इस contact screw को attached है. ये contact screw है हमारा. Okay, then the other end of the battery is connected to the contact screw with the switch in the middle. ये जो है other end, so negative terminal is attached to the screw. You can just see ये जो pointed, ये जो मार्क है राउंड वाला, ये स्क्रू है, ये स्प्रिंग है हमारा जो स्क्रू को स्प्रिंग के साथ अटैच करेगा. ये डिपेंड करता है, depends on the, listen carefully, it depends on the switch which is in which is on and off. तो ये देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है ये स्प्रिंग और स्क्रू के बीच में. So now this one, it is attached to the, this spring is attached to the screw, and this one end of the battery is connected to the other end of the screw, okay, which is having the switch in the middle. तो ये switch भी है इसका बीच में, it is having the switch in the middle. Okay, now ये जो है हमारा बटन, ये पुश बटन जो हमारे डोर बेल या जो भी हमारा बटन होगा, मेन स्विच जिसपे हम पुश करेंगे. So this is the push button. So just I will write it push button because this we are going to push it. हम पुश करने वाले हैं, तभी वो बेल बजेगा जब हम पुश करेंगे. ओके,
So now we will start. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. Listen here carefully, everyone. Please listen. So the electric bell contains the electromagnet. Magnet is wrapped with the coil. Okay, and it becomes the electromagnet because it is attached to the circuit. Or one end of the electromagnet is connected to the end of the battery. The other end of the battery is connected to the screw which is attached to the spring, and the spring is attached to the hammer. ये हमारा हैमर है, ये हमारा गॉन्ग है जिसके ऊपर वो बजने वाला है बेल. ये गॉन्ग है, ये हैमर है. Okay, understood everyone? Just wait. So this is the electric bell. Now this is the structure. Now we will see the working of the electric bell. So बच्चों ध्यान से सुनना है one by one because I am going to explain each and every point. So first ये सिंपल स्ट्रक्चर है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक एंड हमारे बैटरी को अटैच है, दूसरा बैटरी का एंड हमारे स्क्रू को अटैच है, जो स्क्रू यहाँ स्प्रिंग को अटैच है जिससे ये हैमर जो है वो बजने वाला है. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हेन द स्विच इज ऑन. ये हमारा पहला पॉइंट है. अगर स्विच ऑन है देन ये कॉइल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो गई, सबसे पहला पॉइंट, एवरीवन लिसन केयरफुली. नाउ डोंट राइट एनीथिंग, लिसन एवरीवन. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, जैसे ही स्विच ऑन होता है इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्विच ऑन होने से क्या होगा, फिर क्या होगा, when the electric current is passed through the electromagnet, what will happen? कौन आंसर देगा इसका? What will happen? When the electric current is passed through the electromagnet, what will happen? This is the iron piece which is wrapped with the coil. अभी कोई आंसर नहीं दे रहा है क्या? Okay. So what will happen now? Yes. So what will happen? These electromagnet will act as a magnet. वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आयन को. It will try to attract. ये देखो इसके सामने क्या है, रॉड है ना, ये इतना बड़ा रॉड दिखा सबको, isn't it? So अभी इसको अट्रैक्ट करेगा. Understood? So it will act like a magnet और ये अट्रैक्ट करेगा स्प्रिंग को. नहीं तन में स्प्रिंग इधर है बेटा, स्प्रिंग दूर है, ये इधर है. ये रॉड है, ये रॉड देखा आपने सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने क्या है, ये बड़ा सा रॉड है. ये रॉड दिख रहा है पूरा. तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा. ये पूरा यहां से यहां तक रॉड है. So it will attract the rod. समझ में आ गया? Yes, it will behave like a magnet and it will attract the rod. So switch on हो गया and the iron core acts as an electromagnet. ये जो iron core है it acts as an electromagnet. Second step, the iron core attracts the hammer. Iron core attracts the hammer. You can just see, ये पूरे इसको अट्रैक्ट कर देगा. ये पूरा रॉड इधर आ जाएगा तो ये इसके साथ साथ हैमर भी आ जाएगा. समझ रहा है? ये जैसे ही हैमर इधर आ जाएगा, ये हैमर इधर टच हो जाएगा क्योंकि ये पूरा रॉड ही आ जाएगा.
ऐसे सरक रहा है, चिपक रहा है, तो ये हैमर भी इधर अटैच हो जाएगा और बजेगा टंग, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी ये अट्रैक्ट हो गया तो सेकंड स्टेप क्या होगा, ये ऐसे खींच गया इधर, जैसे ही ये खींच गया तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, ये इधर गैप आ जाएगा, ये इधर खींच गया ना, ये पूरा का पूरा इधर खींच गया, ये इधर गैप आ गया, गैप आ गया तो क्या होगा, सर्किट फिर से ऑफ हो गया, ये कनेक्शन ब्रेक हो गया ना, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच यानी कि बटन पे हमारा हाथ है लेकिन सर्किट बंद हो जाएगा। बच्चों आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली इन हिंदी, तो ध्यान रखो। तो यहाँ पर ये ऐसे चिपक गया, स्प्रिंग इधर सरक गया, स्प्रिंग सरक गया तो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। इधर देखो, डायग्राम की तरफ देखो, और जैसे ही ये स्प्रिंग इधर सरक गया, कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद सर्किट ऑफ हो गया, कनेक्शन ही ब्रेक हो गया ना, तो सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि वो क्या हो गया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है तो वो फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा। तो जैसे ही अपनी जगह पे चला जाएगा तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये स्प्रिंग फिर से इधर चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वापस से स्प्रिंग ऐसे यहाँ से ऐसे चिपक जाएगा, फिर से ये चिपक गया है, फिर से सर्किट ऑन हो जाएगा। कनेक्शन पूरा सेटिंग ऐसे है कि ये स्प्रिंग अगर इधर चिपक गया तो सर्किट ऑन हो जाएगा। सर्किट ऑन हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा, दिस पोल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। फिर से ये मैग्नेट बन गया तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पर, तो फिर से ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया तो सर्किट फिर से ऑफ हो जाएगा। सर्किट ऑफ हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से पावरलेस हो जाएगा। ये पावरलेस हो गया, फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा, ये अपनी जगह पे चला जाएगा, स्प्रिंग फिर से अपनी जगह पे ऐसे लग जाएगा। स्प्रिंग लग गया, सर्किट ऑन हो गया। इसीलिए जब हम बटन पे पुश करते हैं बटन को तो ट्रिंग ऐसे आवाज होते रहता है, मतलब वो गॉन्ग होते रहता है ऐसे, ये हैमरिंग होते रहता है क्योंकि ये अंदर ही अंदर सर्किट ऑन ऑफ होते रहता है। सर्किट इज continuously on and off during our push button is on. Now have you understood? ये सब इंटरनल सेटिंग इस तरह है कि वो मैग्नेट खींचेगा, खींचने से यहाँ कनेक्शन ब्रेक होगा, ब्रेक होने से फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये फिर से इधर सरक जाएगा, तो फिर से ऑन हो जाएगा, फिर से ये अगर यहाँ जुड़ गया तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाएगी, ऑन होने से इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये इसको खींचेगा, खींचने से इसमें फिर से गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा तो ये फिर से ब्रेक होगा, लेकिन ये ऐसे टंग 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 बजते रहेगा, ये ऑन ऑफ होते रहेगा। हैमर जो है वो गॉन्ग को लगते रहेगा, छूटते रहेगा, लगते रहेगा, छूटते रहेगा, और ये लगते छूटते समय टंग 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 इसको बजाते रहेगा। हैमर विल स्ट्राइक द गॉन्ग एंड द इलेक्ट्रिक बेल इज ऑन। अंडरस्टूड? अभी मुझे जस्ट आई विल रीड, अगर आपको नहीं समझा है तो पूछो। So the hammer hits the gong of the bell and produces the sound. The circuit breaks at the contact screw when the hammer moves toward the iron core. At this point, the iron core ceases to be an electromagnet. तो जैसे ही ये स्क्रू इधर आ गया, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप यानी कि वो
मैग्नेट के जैसे बिहेव करना स्टॉप हो जाएगा और ये फिर से अट्रैक्ट करते करते इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, ये जाके यहाँ लग जाएगा, ये जाके यहाँ लग जाएगा। तो फिर से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा, क्योंकि अभी भी हमारा बटन ऑन है, ये याद रखो बच्चों, पुश बटन ऑन है। तो यहाँ फिर से सर्किट ऑन हो जाएगा, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट और ये ऐसे ऐसे चलते रहेगा। So have you understood? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? सिंपल सा डायग्राम है, आपको ये ड्रॉ भी करना है। अंडरस्टूड? You have to draw it in your notebook and you have to learn by heart. I will be taking just the assignment on these electric bell and electromagnet. याद रखो, डायग्राम आपको पढ़ना भी है, डायग्राम also and the working of electric bell also. Okay, so this is regarding the electric bell. अगर किसी को नहीं समझा है, रितांशु तो अभी आपको क्या फायदा है? ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट डायग्राम हो चुका है, तुम लोग 20 मिनट 30 मिनट के बाद ज्वाइन होते हो। Is there anybody else who did not understand? So students, again I am telling you, ये लिंक जो है वो अनलिस्ट नहीं किया है मैंने, यू कैन सी डायरेक्टली ऑन द यूट्यूब। ये प्राइवेट नहीं किया है, अनलिस्ट नहीं किया है, तो इसको आप देख सकते हो। और टुमारो ऑल्सो द सेम थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू अनलिस्ट इट नाउ। समझ में आ गया? आई एम नॉट गोइंग टू अनलिस्ट इट। तो टुमारो डोंट वेट फॉर द लिंक टू कम। टुमारो डोंट वेट फॉर द लिंक, डायरेक्टली गो ऑन द यूट्यूब और मेरे चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर दैट। सब्सक्राइब भी कर दो, यू विल गेट इट, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं लाइव आ जाऊंगी तो। ओके, so don't wait for this one. Have you understood everyone? So now question and answers, students. Just listen carefully. Here also in NCERT also the diagram of electric bell is given. Anyone you can just refer it. बस उसका वर्किंग सिंपल है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट खींचता है, एक अट्रैक्ट करता है रॉड को, तो वो बेल यानी गॉन्ग जो है वो बजता है और फिर से बजने के कारण उधर से कांटेक्ट छूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो सर्किट ऑफ हो जाता है। ऑफ होने से फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करना छोड़ देता है, तो ये जो है जो रॉड है वो अपनी जगह पे चला जाता है, वापस चला जाने से फिर से सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है और इस तरह से ब्रेक ऑफ ऑन होते होते इलेक्ट्रिक करंट और इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल जो है वो आवाज करती है। ओके, अंडरस्टूड? देन यस, एवरीवन हैव अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैव डाउट? यहाँ पर जो भी है मुझे दिख रहे हैं बच्चे। हाँ, सूरज, शारदा, आद्या, वर्षा, तेजस्विनी, तन्मय, वाणी, कपिल, ये कौन है? बीपी गेमर, पीयूष, ओके, महक, अनुष्का, शिवराज, चिन्मय, गौरी, no one have doubt? Okay, so let us go for Vani, Pragya, Anisa, Shivganga, so no doubt, Nitya, Varsha. So let us go for the question and answers. So I will be sending you the question and answers today. Okay, understood? हाँ,
So here so many questions are given in your exercise related to this. So very short टाइप में भी बहुत सारे questions हैं, short टाइप आंसर्स में भी बहुत सारे हैं. So you have to write it down everyone, and this question answers I will be sending it today. Okay, आज ही मैं भेज दूंगी, but you have to just write it down. Now listen here students. HOTs देखो आप, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चंस हैं. In the activity 3 given in this book, would the nail act as an electromagnet if the insulated copper wire is replaced by a rubber band? Activity 3 में देखो, so you are having this one. Activity 1 is there, then 2 and 3. So here insulated copper wire is there, and if we are replacing the insulated copper wire with rubber band, अगर हमने रबर बैंड को कॉइल किया है, रैप किया है, will the nail act as a electromagnet? सभी को ये आंसर देना है. I want the answer. See, everyone see the textbook and electromagnet देखो. Activity 3 देखो. Activity 3 देखा तुम लोगों ने? वहां जो कॉपर वायर है, उसके बदले अगर हम रबर बैंड उसको रैप करते हैं, कॉइल करते हैं, तो will the nail act as a electromagnet? नेल एक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे अगर हमने कॉपर वायर निकाल दिया है और रबर बैंड लगा दिया है तो? ये तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो? समीक्षा, नित्या, कपिल, रबर बैंड से कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? रबर बैंड इज एन इंसुलेटर. अगर रबर बैंड हम उस पर रैप करते हैं तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट विल स्टॉप. अंडरस्टूड? एंड द नेल विल नॉट बिकम बिकॉज उसमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो होगा नहीं. रिमेंबर, rubber band is not going to act, or rubber band will not pass the electric current, or as well as जो स्ट्रेंथ उसे मिलना चाहिए एक आयन नेल को, वो नहीं मिलेगा. ओके, देन नंबर 2, can an insulated copper wire be used in an electric fuse? Why or why not? Now tell me. क्या हम फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए कॉपर वायर यूज कर सकते हैं? Why or why not? Why और why not? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सब यस मैडम, ओके मैडम, ये क्या है? आई एम आस्किंग यू, can an insulated copper wire is used in an electric fuse? वानी, इट इज रॉन्ग. तो इंसुलेटेड, सबसे पहले तो इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज नहीं कर सकते. इंसुलेटेड मीन्स जिसको ये वायर है उसके ऊपर अगर ये प्लास्टिक का कोटिंग है
then it is called as an insulated. This is insulated. And we cannot use the insulated copper wire क्योंकि वायर से फ्लो होना है और उसको कांटेक्ट भी चाहिए. It cannot be used. Then, and second thing is that एक तो ये insulated है, it is covered by plastic. Second thing, we cannot use copper. We have to use the fuse wire of particular metal only. फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर मार्केट में मिलता है वही हमें यूज करना है, नॉट द कॉपर वायर, बिकॉज फ्यूज वायर का जो कैपेसिटी या लिमिट है वो अलग होती है, अलग देन द कॉपर वायर. समझ में आ गया? तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या जल्दी जल्दी भी वो फ्यूज हो सकता है. सो इट इज बेटर टू यूज स्पेशल ओनली फ्यूज वायर. कॉपर वायर यूज नहीं करते हैं. फ्यूज वायर अलग से आता है, फ्यूज तार अलग से आता है. अंडरस्टूड? देन so these are all different questions. Now so I told you to draw the diagram of electric bell also. You have to write down the working of the electric bell. It is, I think it is given in the question answers also. If it is not, then you have to write down the working of electric bell. So here it is given in the long answers. Explain the working of an electric bell using a diagram. So दोनों इसमें आ गए. You have to draw the diagram as well as you have to write down the working of the electric bell. दोनों. Okay? Understood? Then next. Fill in the blanks, students. Just we will discuss because again 2-3 minutes I will take. And dash, and is already given. And dash supplies the current in a circuit. What is the answer? Tell me. And dash supplies the current in a circuit. What? In a circuit. सर्किट के अंदर कौन सप्लाई करता है करंट को? हाँ, यस वानी. एंड इलेक्ट्रिक होगा क्या? सर्किट को, हमारे सर्किट को कौन सप्लाई करता है करंट? हु सप्लाइज द करंट? इलेक्ट्रिक सेल. वानी, इट इज इलेक्ट्रिक सेल. करंट नहीं तन्मय, करंट नहीं, सर्किट की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक सेल. ओके, इलेक्ट्रिक सेल. एंड इज ऑलरेडी गिवन. हिंट बार दिया है ऑलरेडी. देन नेक्स्ट. Water heater, toaster, food warmer work on the principle of, yes, heating effect of electric current. Number 3. If two current carrying wires with torn insulation, यानी उनका insulation निकल गया है like this. If it is torn, then they touch each other accidentally. It is termed as short circuit. Short circuit. Correct, Tanmay. Very good. Next. Number 4. Magnetic effect of current was first observed by.
Yes. Observed by Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted. Next. The filament of bulb has dash melting point. High melting point. The filament of bulb has high melting point. Very high melting point. So this is the correct answer. Okay, students. So tomorrow, write all the question answers. I will be giving you in the group. I will put the question answers, and remember that you have to read once again the textbook, and also the next, that is the lesson which we are going to start. That also you have to read. Next lesson. What is our next lesson? Light. Okay. Thank you, students.